Hey everyone, this is our third lecture on triangles, is it? Or is it second lecture? It's our second lecture on triangles, not third. Second lecture, okay, not third, second lecture on triangles. We've already seen different properties of triangles, types of triangles, congruency and similarity of it. What we're going to do now is go a little bit in depth, yes, try and understand what special triangles are, a few other properties of isosceles triangles, equilateral triangles. We will also be looking at Pythagoras theorem and Pythagorean triplets. Okay, hi Nalin, good evening. Hello Bablu. I'm doing great, Bablu. Thank you so much for asking. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai. I have over 6 years of experience and I've taught quantitative aptitude to over 2 lakh students. Please don't forget to follow #CAT live daily the next time you're on Instagram. Also, get yourselves added to these 2 groups to get updates on anything that we have planned for your MBA prep. These are our toppers from the last years. If you are planning on taking Iconic subscription, then I'd want you to listen to this because I want you to know what Iconic subscription is. Under Iconic subscription, you will get all the benefits that a Plus subscriber would get. But along with that, you will also be getting a personal mentor assigned to you who will help you every step of the way with respect to your test prep or your admissions or WAT, GD, PI, also with your omits. Yes, and there will also be standalone omit preparation and personalized test reports and analysis would be sent to you to help you understand where you are, how much you've improved, what are your weak areas, what are your strong areas, ultimately helping you to improve or increase your efficiency when you go for tests. These are all the upcoming batches that we have coming on Unacademy. You join one of them. This one just started on the 6th. This will be starting on Monday. This will also be starting on Monday. Apart from these, I am also starting a batch. मेरा भी एक batch start हो रहा है 8th March से on geometry and mensuration. So if you are someone whose geometry and mensuration is not that strong, then you can join this. This will be 6 PM to 7:30 PM ka class. Yes. So to enroll in one of these batches, you can take the Plus subscription. You can go for the 12-month or 24-month one. Use my referral code Surana Live. Get your 10% discount. Yeah. Otherwise, you can also take the Iconic 12-month, 24-month ones. Don't forget to use Surana Live. Get your 10% discount. No cost EMI options are also available, so you can go for that. Yeah. Chalo, shall we begin? Hi Keshav, hello Manish. Hi Pankaj, good afternoon. Hello Keshav, good afternoon. Good afternoon Shreyashi. Thank you so much Bablu. ऐसा एक बदमाश होना चाहिए हर ग्रुप में. Help us be disciplined. Chalo. So we've already looked at different properties of triangles, right? We've looked at property where sum of any 2 sides must be greater than the third side, difference of any 2 sides must be less than the third side, sum of all interior angles should be 180, sum of all exterior angles must be 360, and any exterior angle will be equal to the sum of the opposite 2 interior angles, right? यहाँ तक अपन ने theorems देख लिए. Now I think let's talk about a little bit more in detail with respect to an equilateral triangle. Yes. Yeah, equilateral triangle. So apart from the fact that each of their angles is 60 and all their sides are equal, are there any other properties of an equilateral triangle that we should know? Of course there are, right? So let's talk about them now.
since all the sides are equal, if I take any vertex, and I draw a line perpendicular to the opposite side, yes, draw a line perpendicular to the opposite side, then this perpendicular line will become the median also. What is a median? What is a median? A median is a line that divides a side equally. Yes, basically bisects a side. Yes, that's a median. And what's an angular bisector? Angular bisector divides an angle equally, right? So in an equilateral triangle, the median is the same as your angular bisector, which is the same as your perpendicular line. Getting it? तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये इस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा एंड इस एंगल को भी इक्वली डिवाइड करेगा. गेटिंग इट? या ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में. कूल, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स हियर गाइस? इसमें कोई डाउट? Hi Siddharth, hello Tanishq, hi Gaurav, good afternoon. Done na? So that's with equilateral triangle. Median, angular bisector, perpendicular bisector या perpendicular line, all the same. Yes. तो अगर ये ABC है triangle, तो AD will become that. No issue Siddharth, आ जाओ. Hi Shubham, good evening. Yes, that's with equilateral triangle. Similarly, in just similar way, in an isosceles triangle, same things happen. Correct, Tanishq, correct. So ultimately they'll become half of the whole thing. Yes, yeah, they'll become congruent. Super. In an isosceles triangle, yes, isosceles triangle है ये ABC. If I say that this side and this side are equal, AB and AC are equal, your distinct side is BC. Yes, BC अलग side है, distinct. So a line drawn from the distinct the distinct angle, क्योंकि एंगल भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, राइट? यस, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टिंक्ट साइड, अनइक्वल साइड, नॉन इक्वल साइड के डिस्टिंक्ट, मतलब नॉन इक्वल साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ओनली देयर, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर लाइन विल ऑल्सो एक्ट एज योर मीडियन. Yes, and it will also act as your angular bisector. समझ रहे हो? तो here your AD will be your median to what? BC. Angular bisector to angle BAC. Yes. And it will also be perpendicular or height, basically height of the triangle. Yes, AD. On the other hand, if I draw something like this here, let's say अगर मैं B से अगर मैं draw करूँ, right, from vertex B if I draw a perpendicular line, so this perpendicular line will only act as a perpendicular line, that's it. This will not be an angular bisector, this will not be a median. समझ में आ रहा है? तो BE
BE, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो बस ये परपेंडिकुलर लाइन ही रहेगा, दिस विल जस्ट बी द हाइट ऑफ इट, दिस विल नॉट बिकम द एंगुलर बाइसेक्टर और मीडियन। यस, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेम लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है, दैट वर्क्स ओनली विथ व्हाट, योर डिस्टिंक्ट साइड का मीडियन। यस, और डिस्टिंक्ट एंगल से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, सी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर तो रहेगा ही रहेगा, ये मीडियन भी बन जाएगा और ये एंगुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एनी मीडियन इज एन एंगुलर बाइसेक्टर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइन, राइट? बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट साइड पे काम करेगा। अदर प्लेसेस whatever you draw, if you draw a median then it will act only as a median, if you draw an angular bisector it will act only as a angular bisector। समझ गए? Yes, any doubts here guys? इसमें किसी को कोई डाउट? डन ना? ठीक है, आगे हम we will be talking about what a centroid is। सेंट्रॉइड है, राइट? वी हैव ऑर्थो सेंटर, यस, वी विल टॉक अबाउट दीज लेटर, राइट? टुमारो, कल बात करेंगे इनके बारे में। दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल जिसके अराउंड सर्कल है, या अ ट्रायंगल वेयर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ऐसे जगह पे ये बहुत काम आएगा। तो विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। ओके, नाउ लेट्स गो टू सबसे इंपॉर्टेंट, Pythagoras' theorem। यस, Pythagoras' theorem के हिसाब से क्या है, इन एनी राइट ट्रायंगल, in any right triangle the longest side which is your hypotenuse, yes, A B C, hypotenuse क्या हो गया, AC, yes, AC is your hypotenuse, yes, if I consider this as the base then this becomes the height। Yes, so according to Pythagoras' theorem, the square of hypotenuse, h लेंगे इसको h, चलो hypotenuse, right? Square of hypotenuse is basically equal to the sum of the squares of height and base। Yes, so according to this situation, your AC square will be equal to AB square plus BC square। Yes, or AC is equal to square root of AB square plus BC square, है ना? Hi Prithvi, hi Aritra, good afternoon। Got it? This is your Pythagoras' theorem. This is something that we already know, most of us know। This works only for a right angle triangle। Yes, जहाँ कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती बनाओ। यस, इन मोस्ट केसेस इट विल वर्क। जहाँ कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वहाँ बना दो, राइट? जैसे अगर कोई आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल देता है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट? बिकॉज यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दीज टू विल बिकम मीडियंस, आई मीन दिस विल बी मीडियन, दीज टू विल बिकम equal, right? Ultimately giving you what, the sides of all of this। तो इस ट्रायंगल में finding out the height is no big deal, ठीक है, provided this is an isosceles triangle। cool। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी कहीं पर भी आप जबरदस्ती बना सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ
let's talk about, since we are talking about Pythagoras theorem, right? Let's talk about Pythagorean triples. Yes, Pythagorean triples क्या है? Yesterday we had looked at it, right? कल अपन ने बात किए थे उसकी, right? Pythagorean triplets या triples, जो भी बुलाना है उसे, या these are three terms that will follow the Pythagorean theorem. Yes, three terms that will follow the Pythagorean theorem, right? Very standard. कोई बोलेगा सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्या है इसका? हाँ शुभम, वही है ना, assume this is a, assume करके कर लो, draw imaginary, या 3 4 5. अभी कोविड टेस्ट कराने क्यों जा रहे हो? अभी डायरेक्ट वैक्सीन लगाने जाओ भाई, अभी टेस्ट लेके पैसा क्यों बर्बाद करोगे? या सो मोस्ट कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 3 4 and 5, राइट? 3 4 and 5. सो व्हाट हैपेंस, लार्जेस्ट साइड 5 का स्क्वायर, यस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. Yes, 25 is equal to 9 plus 16, works out, है ना? So in fact not just 3 4 5, any sides which are in the ratio 3:4:5 ये work करेगा. Yes, for example take 6 8 and 10, right? 6 8 and 10. तो 10 square is equal to 6 square plus 8 square. 36 plus 64 is equal to 100. Works out, है ना? So any terms that are in the ratio 3:4:5 will work. Yes, ये सबसे common Pythagorean triple है, right? Apart from that, what else would work? We have another common one is 5 12 13. Yes, 5 12 13 ये भी common है. 3 4 5 जितना नहीं, but ये भी common है, right? यहाँ पे क्या, 13 square will be equal to 5 square plus 12 square. Yes, 169 is equal to 25 plus 144. Agreed? किसमें इक्वल करना होता है नहीं समझा मैं. मनीष क्या बोल रहे हो आप? किसमें किसको इक्वल करना पड़ता है? सेवन 12 13 7 12 13 पंकज, okay, no issues Aritra, जाओ, all the best. This is one test which I would say don't pass. मैं नहीं समझा मनीष, आप क्या बोल रहे हो? पंकज 7 12 13 वर्क करेगा क्या? देखो 7 12 13, yes, 13 square is 169, 7 square is 49, 12 square is 144. 144 plus 49 is less than 169, है ना? So greater than 169. Yes, 5 12 13 है वो. 5:12:13. Any term in the same ratio, 5 12 13 के रेशियो में अगर होगा तो it will follow. ठीक है? Yes, apart from that another common one is your 7 24 25. 7 24 25. Yes, तो ये कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है. इनके अलावा बहुत सारे हैं, राइट? इनके अलावा बहुत सारे. यहाँ पे देखो 625 will be equal to 24 square plus 49. यस, इनके अलावा और कौन से कॉमन है? वी हैव आर 8 15 17. यस, ये भी वर्क करेगा, है ना? इसके बाद सारे बड़े वाले, राइट? सो दिस इज इनफ. गॉट इट? 1 2 3 4. सबसे ज्यादा कॉमन ये है, राइट? मोस्ट कॉमन इज दिस, मोस्ट कॉमन 3 4 5. अगर आपको दिखे कोई दो नंबर, कल तो इनफैक्ट पिथागोरस थ्योरम भी नहीं था,
याद है आपको कल जहां पे अपन ने पिथागोरियन ट्रिपल्स यूज किए वहां पे थियोरम था, मतलब ट्राइंगल ही नहीं था, बट वी स्टिल यूज्ड इट, राइट? सो व्हेनेवर यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, गो अहेड एंड यूज इट. यस, हाँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्राइम नंबर ही तो है. आई मल्टीप्लाइड इट बाई 2, नो तनिष्क? 3 से करके देख लो, 3 से करके देख लो. 9, 12, 15. 15 square 225 is equal to 81 plus 144. Works. Yes. इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ, इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ पैटर्न. यहाँ पे ट्रिक नहीं है, ये पैटर्न है. यस, इसको याद करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर गो. बाकी के दीज टू आर लीस्ट कॉमन. यस, सबसे कम कॉमन ये है. ये अगर आ गया तो आप बैठ के सॉल्व कर लो, राइट? बट ये दोनों इफ यू कैन रिमेंबर थोड़ा सा इजी हो जाएगा टास्क. दिस एंड दिस इफ यू रिमेंबर, हाई मोस्ट कॉमन दोनों. ठीक है, डन. So that's Pythagorean triplets, right? Now let's talk about special triangles. Yes, the first one we are going to talk about is 45, 45, 90. 45, 45, 90. 45, 45, 90 is what? This is an isosceles right triangle. 45, 45, 90 क्या है? Isosceles right triangle. Yes. तो यहाँ पे if you have a triangle where one angle is 90 and the other angles are equal. Yes, one angle is 90 and the other angles are equal. Isosceles right triangle, है ना? This is the only possible isosceles right triangle. ये पता है? ये पता है ना guys? This is the only isosceles right triangle. 45, 45, 90. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, right? तो यहाँ पे क्या होगा? द साइड्स ऑपोजिट टू 45 ऑपोजिट. तो यहाँ पे इफ आई से दैट दिस इज ए, अगर मैं बोलूँ ये ए है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? √2a, करेक्ट? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम दिस साइड AC should be equal to root of a square plus a square, that is root of 2 times a square which is √2 times a. yes, तो यहाँ पे क्या? 45 के सामने वाला अगर a है, इस 45 के सामने वाला भी अगर a है, तो 90 के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? √2a. These are all what? Sides opposite to the angles. Sides opposite to the respective angles. Yes, not adjacent, क्योंकि adjacent दो आएंगे, opposite सिर्फ एक ही रहेगा. समझ गए? 45, 45, 90. और if I tell you that this is a, अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा? a by √2. This will also become a by √2. समझ रहे हो? If this side is a, then this is a by √2, a by √2, वैसे. Yeah. So quick example: if in an isosceles right triangle, if one of the sides is equal to one of the equal sides is equal to 10 centimeter. Yes, one of the sides is equal to 10 centimeter. Isosceles right triangle में one of the equal sides is equal to 10 centimeter. Then what is the perimeter of it? बताओ जल्दी से. In isosceles right triangle, if one of the equal sides is 10 centimeter, then what is perimeter? Quickly tell me.
अभी बस ऐसे ही कर रहा है एग्जाम्पल, जस्ट टू चेक इफ यू अंडरस्टूड दिस. 34.1, Rahul says 34.1, others. बाकी तो यहाँ पे क्या होगा, a root 2a is saying one of the equal sides is 10. मनीष नहीं मैं हाइपोटेन्यूज नहीं मांग रहा हूं, मैं पेरीमीटर मांग रहा हूं, पेरीमीटर. So if one of the equal sides is 10, then the other equal side is 10, and the third equal side will be root 2 times 10, which is 1.414 into 10. Yes, which is 14.14. है ना? So if I add this, perimeter is basically what? Sum of all this. So if I add this, I will get what? 34.14 centimeter. Got it? Yes. चलो, तो एक स्पेशल ट्रायंगल हो गया 45, 45, 90. The second special triangle that we are going to talk about is 30, 60, 90. Yes, 30, 60, 90. So yeah. So if you have a right triangle, yes, where one angle is 90 degree, one is 60 and the other is 30. Yes, if this is the case, 30, 60, 90, yes, then the sides opposite to them, if I tell you that the side opposite to 30, yes, opposite to 30 अगर A है, yes, then opposite to 90 will become 2A, yes, and opposite to 60 will become root 3A. Yeah, समझ रहे हो? यस गाइस, ये आया क्या समझ में आप लोगों को? यस, तो इफ आई टेल यू द वन ऑपोजिट टू 30 अगर A है, मतलब 30 के ऑपोजिट ये अगर A है, तो 60 के ऑपोजिट वाला क्या होगा? रूट 3 टाइम्स A, एंड 90 के ऑपोजिट वाला क्या होगा? 2 टाइम्स A. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, Lami's theorem. I'm not very sure what that theorem is. Milan. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. So here what you can actually use is you can draw another perpendicular. Draw a perpendicular from here. Yes, if you draw a perpendicular from here, this will become what? This will become another right triangle, right? 30, 90, and this will become 60. समझ में आ रहा है? Yes, 30, 60, 90. This will become another right triangle. Yes, and that will be another right triangle. Or the fastest way to deal with it is using trigonometry. Yes, trigonometry use करो, हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Correct, Milan. Yes, super. So if we take sine 30, right? What is sine 30? I'm saying this is A. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये A है. What is sine 30? Sine 30 is equal to opposite A by hypotenuse, right? By hypotenuse. तो hypotenuse क्या हो जाएगा? Hypotenuse will be equal to sine 30, which is 1 by 2. Yes, so 2 into A, 2 times A.
समझ में आ रहा है? साइन 30 क्या है? 1/2. तो 1/2 इंटू 1 by hypotenuse will be 1/2a or hypotenuse is 2 times a, right? You can now use sin 60. अभी आप sin 60 यूज कर सकते हो. sin 60 will be equal to what? This is 2a, this is base, yes, will be equal to base by hypotenuse, yes. What is sin 60? √3/2. Yes, √3/2 is equal to base by 2a. तो ये कैंसल और बेस becomes equals to what? √3a. समझ रहे हो ये? हाइपोटेन्यूज बेस. तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री देयर. Yes, you don't have to use trigonometry there. This is me just trying to help you understand how this came. ये कैसे लगा? आया क्या समझ में? This is just the explanation. This is, if you remember this, 50% of questions, 50% of trigonometry questions can be answered using this. Yes, आराम से, in fact, not even like stressful, easily हो जाएगा. ठीक है? Any doubts here, guys? किसी को? Anybody? So these are the two special right triangles. Yes, those special right triangles थे. क्या क्या? 45, 45, 90 and 30, 60, 90. ठीक है? Any doubts here, guys? ये दो बहुत जरूरी है आपके ट्रिग्नोमेट्री को इजी करने के लिए. कूल. श्रेयसी, ट्रिग्नोमेट्री इज देयर बट इन दिस फॉर्म. या तो इस फॉर्म में होगा ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज यू माइट हैव इट इन द फॉर्म ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस. बट आजकल पूछना बहुत कम कर दिया. दे हैव रिड्यूस्ड आस्किंग ट्रिग्नोमेट्री. But if they do, then it'll probably be from height and distance. Yes, chalo. Special right triangle sorted. Yes. Example करेंगे अभी. Shall we start off with examples? चलो, let's start with examples now. Read the question carefully and answer. ठीक है? हाय ऋतिक. पंकज से सी. साक्षी से सी. अदर्स? बाकी लोग
जल्दी से करो ट्राई गाइस. They're asking what is the length of BD. Quickly try. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज अ प्रॉपर्टी. लिसन, yes, property of a right triangle. ध्यान से सुनो. a median drawn to the hypotenuse will be half the length of the hypotenuse. समझ गए? half the length of the hypotenuse. Yes. So if you can remember that, okay. Otherwise, how else can you prove it? How else can you prove it? So if you try proving it congruent, congruent proof करने के लिए आपको और भी कुछ चाहिएगा ना, right? You will need AB का length, BC का length, something, right? Are you understanding this? Yeah. So this is a property. A median drawn to the hypotenuse will be half the length of the hypotenuse. Yes. तो अगर ये median है, if BD is a median, then BD का length will basically be half of this. That's it. Yes. So if AD is 6 centimeter, then this will be half of it, 3 centimeter. That's it. समझ में आया? Guys, या इसको प्रूव करने के लिए, फिर इसको प्रूव करने के लिए we're gonna have to draw a perpendicular here. Yes, perpendicular यहाँ पे ड्रॉ करके फिर प्रूव करना पड़ेगा. That will become too complex. ठीक है, तो इसका प्रूविंग बाद में कर लेंगे, स्पेशल क्लास में कर लेंगे जहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा इजी. या चलो, हाँ मिलन. In an isosceles triangle, same, but not all medians, only drawn to the unequal side, distinct side. The median drawn to the distinct side will be perpendicular. ठीक है, चलो quickly try this now. Try this question. हाँ मिलन. Sakshi says A. Sakshi says A. Okay.
Nalin says B. हो गया क्या? Milan says C, Manish says A. Okay, A, B, C, or they're saying AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC. And BD is perpendicular to AC. Yes. Then saying CE angle bisects the angle C. CE bisects the angle C. मतलब ये दोनों bisect हो रहे, equal हो जाएंगे. Angle A is 30. They're asking what is the measure of the angle CED. CED. This angle. So if I join this CED. Okay, गंदा join हुआ है. If I join this CED, तो ये एंगल कितना है पूछ रहा है. Yes. चलो first things first, let's find out what angle C is. Yes, angle A 30 है, एंगल B 90 है, तो एंगल C क्या हो जाएगा 60. Yes. Angle C is 60. That means angle DCE, क्योंकि ये angular bisector है, will be what? Half of 60. That is 30 degrees. Correct? That means this angle is 30 degrees. This is 90. है ना? ये वाला angle जो है, this part is 90. Yes, what do we have to find out? This angle. समझ गए? Are you understanding, guys? Yes or no? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. When we join E and D, ये पार्ट भी तो है, ये 90 है, बट ये पार्ट क्या है फिर? Something's wrong here. डायग्राम में प्रॉब्लम है. There's an issue with the diagram. एक सेकेंड रुको, चेक करता हूँ. ठीक है, चलो CED जाने दो, CEB कर लो.
दैट्स ऑल आई कैन डू राइट नाउ. CEB कर लो. यस, बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है ये एंगल निकलना मुश्किल है. इट्स नॉट इजी. CEB couldn't think of anything. तो ये 30 है तो ये भी 30 है. दिस इज 30, दिस इज 90, दिस हैज टू बी 60. ठीक है. अदरवाइज फाइंडिंग CED इज very difficult. Got it? $60 से कम होगा, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. सो यू आर नॉट श्योर. पैरेलल लाइन तो बना देंगे, पैरेलल लाइन बना देंगे, बट इट वोंट जॉइन E and D, नो, इट वोंट जॉइन E and D. Yeah, B60 asking for CEB, okay, not CED. CED का नहीं बनेगा C. Anyway, चलो ये वाला ट्राई करो. लेट्स होप दिस इज राइट. ये सही है. ये वाला ट्राई करो जल्दी से. बहुत ही सिंपल है ये, वेरी सिंपल. मिलन E ये है. आई थॉट दिस वाज अंडरस्टूड. एक ही मिसिंग पॉइंट है, E ये है. Nalin says A. Others? Avyav says A. Pankaj says A. Others? Shreyashi, Tanishk, very good. So they're saying AB and CD are parallel. Angle BAE. This angle is 45. DCE, this angle is 50, and CED, this is X. What is the value of X they are asking? Yes, you can use what here? Two parallel lines transversal, this angle and this angle will be equal. Small angles, alternate angles. Yes, if this is 45, then this will be 45. So angle BAE will be equal to angle EDC, equal to what? 45. Why? Alternate angles. Yes, तो ये 50 है, ये 45 है, ये कितना होगा? 85. खत्म. Yes, so in triangle EDC, what do you have? Angle C is 50, angle D is 45, so angle E, which is equal to X, will be equal to what? 180 minus 95, which is 85 degrees. Yeah, simple question. हाँ, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आपको नहीं पता तो यूज स्मॉल एंगल. ठीक है, अपन ने जो यूज किया था स्मॉल एंगल्स. स्मॉल एंगल्स आर इक्वल ना. तो ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये स्मॉल एंगल, ये स्मॉल एंगल. समझ गए अभी? ओके, नाउ डू दिस वन केयरफुली.
Sribeni says A. 1:3. Others? Anyone else? Any other answers, guys? Shreyashi says A. Shubham says A. Rahul, Siddharth says A. Manish says C. Okay. Tanish says A. Pankaj and Milan say B. Superb. और कोई? Anyone else? So read the question carefully first. In the given figure, D, E, F are midpoints, right? D, E, F are midpoints. मतलब क्या? ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, ऐसे, ठीक है, midpoints. And G, H, I are again midpoints. इनके अंदर में ये midpoints है, right? In what ratio are the areas of triangle DHI? DHI ये वाला DHI का एरिया टू AFE का एरिया. Yes, this is what we have to find. DHI AFE. Yes. तो क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, बिकॉज दीज आर मिड पॉइंट्स. यस, व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड? देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट बेटर, राइट? अगर ये मिड पॉइंट्स है, इनको हटाओ. यस, दीज आर मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट से आप ये ड्रॉ कर रहे हो, राइट? फ्रॉम मिड पॉइंट यू आर ड्रॉइंग दिस, है ना, ये. तो FE, कैन आई से द लाइन FE? Yes, FE will basically be parallel to BC, क्योंकि दोनों mid points join हो रहे हैं. Because both mid points are joining, parallel to BC होगा. Yes, और क्योंकि ये mid points है, this and this is equal. Yes, this and this is equal. तो BC और FE का रेशियो क्या हो जाएगा? BC by FE का रेशियो क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा. यस और नो? हाँ या ना गाइस? ये अगर 1:2 है, राइट? ABC एंड AFE, ABC एंड AFE, चलो एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं. लेट्स से ट्रायंगल ABC का एरिया इज A. यस, एंड वी नो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AFE आर सिमिलर, है ना? कैसे सिमिलर हुए वो? हाउ आर दे सिमिलर? SAS. yes, SAS से we can say they are similar. agreed guys? है कि नहीं? क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल है, कॉमन एंगल है, एंगल A इक्वल है. यस, AB बाई AF का सेम रेशियो इज AB बाई AC, करेक्ट? AC बाई AE, है ना? 2:1 का रेशियो सेम है, राइट? सो दे आर सिमिलर. दैट मीन्स अपन ने बात किया था, याद है? यू रिमेंबर व्हेन वी लुक्ड एट सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट डिड वी से? एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो का स्क्वायर, राइट? So ratio of area of triangle ABC, so ABC नहीं, AFE
टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AF बाई AB स्क्वायर, करेक्ट है ना। ट्रिपल ए से भी कॉमन होंगे, करेक्ट। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल ट्रिपल ए से भी सिमिलर हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट 1/2 स्क्वायर which is 1/4. yeah, further what do we have to do, further we have to look at this triangle, अंदर का triangle, yes, further the triangle inside. So what have we figured, we figured that AFE is A/4, AFE का एरिया क्या है, A/4, sorted, yes. And what about DHI now, DHI इस ट्रायंगल का क्या होगा, I can say that this triangle, this particular triangle will be similar to this entire thing. Yes, triangle DHI is similar to triangle DFE. Agreed? तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मिड पॉइंट्स है, here also mid point, so we will have area of triangle DHI to area of triangle DFE will be equal to DH by DF the whole square, which is 1/4, है ना, ये 1/4. तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, DHI will become 1/4 का A/4 का 1/4. yes, that is A/16. yes, now what will be the ratio, ratio of area of triangle DHI to area of triangle AFE is equal to A/4 by A/16, correct? No, A/16 by A/4, which is what, 4:16 or 1:4. So your right answer is B, 1:4, not 1:3. समझ गए? Is that cool? Have you understood this? So this you can remember as a property itself. You will not have to prove similarity over and over again. ये जो similarity है, right? The similarity you don't have to prove over and over again. You can remember it, yes, because this is a common term. Mid point से join करके अगर triangle बनाए तो उसका area क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. Yes, I'll give you another faster way of doing this. इसका हम एक फास्टर वे बताता हूं मैं क्या होगा, राइट? लुक एट दिस, बाय द लुक्स इटसेल्फ यू कैन से, बाय द लुक्स इटसेल्फ देखो, दिस इज वन ट्रायंगल, यस, वन ट्रायंगल, बाकी के देखो, सॉरी, 2 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स. समझ में आ रहा है ये कैसे रेशियो 1:4 हुआ? ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट. हाँ, ये दीज 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन फैक्ट. यस, दीज 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल AFE congruent to triangle BFD, congruent to triangle DFE, congruent to triangle DEC. मतलब चारों के एरिया इक्वल है, चारों के एरिया इक्वल है. ये A/4, ये A/4, ये A/4, ये A/4. समझ में आ रहा है? यस, सेम वे अंदर का भी हो जाएगा, सेम वे अंदर का भी हो जाएगा, है ना? अंदर में भी सेम चीज होगा. अंदर में क्या हो जाएगा? दिस ट्रायंगल 1 2 3 4, बिकॉज दीज आर मिड पॉइंट्स, राइट? तो अंदर का भी सेम कॉन्ग्रुएंट 1/4 हो जाएगा. बुझे? समझ में आ रहा है ये?
तो इसको अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को. वंस यू रियलाइज दैट दिस इज 1/4 और 1/4 का 1/4, दैट्स इट. कूल. चलेंगे नेक्स्ट. शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आर यू गाइज रेडी? चलो. ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस हाइक होने वाला है गाइज. योर 10% डिस्काउंट इज सून गोइंग टू चेंज टू 5%. ये 5% होने के पहले गो टेक द सब्सक्रिप्शन. यूज माई रेफरल कोड Surana Life. If you are someone who is not very comfortable with geometry and mensuration, then do not forget to join my plus course, which I'll be starting on Monday, 8th of March, right? Geometry और mensuration पे course कर रहे हैं. चलो quickly try this question. Hi Shreya, good evening. Guys, if you haven't hit like on this video, like कर देना, ठीक है? Avyav says A 0. How about others? Anyone else? Pankaj says 0. Rohit says 0. Superb. Shreya says A. Sakshi says A. Superb. Very good. Very good, Milan. All right. So in this figure, what are they saying? Angle 1 and angle 2 are equal. Angle 1, angle 2 are equal. They're saying AC and BE are equal, right? AC and BE are equal. Yeah. See, technically, just by the looks of it, है ना? Just by the looks of it, you can say that the point where this meets, yes, ये जो intersection हो रहा है, ये जो intersection हो रहा है, this basically should be your ratio also. Yeah. Let me show. If AC इसको let's call this as D, ठीक है, इसको D बुलाते हैं, right? So we are saying AC is equal to BE, है ना? Yes, and we are saying what? Angle 1 and angle 2 are equal. Angle 1, angle 2 equal है. Yes. So what do we know? We know that DC and BD are equal, correct? BD is equal to DC. Agreed? Yes or no? कैसे? ऑपोजिट एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. तो व्हाट हैव वी प्रूव्ड? वी हैव प्रूव्ड दीज टू आर इक्वल. यस, दीज टू आर इक्वल. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AC में से DC निकाला या BE में से BD निकाला, एक ही चीज है. एग्रीड? तो ये दोनों भी इक्वल हो गए.
यस और नो? यस। तो वापस क्या, ए बी सी ले लो, ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है कर सकते हो, या डायरेक्ट जस्ट यूज लॉजिक। यस, ए बी सी ले लोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इन ए बी सी, यस, ऑपोजिट टू दिस साइड, इस साइड के ऑपोजिट जो भी होगा, बिकॉज दे प्रिटी मच आर द सेम थिंग्स, राइट, दोनों सेम ट्रायंगल्स ही हैं। तो इसके ऑपोजिट जो होगा 3+1, एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंड इन ट्रायंगल BCE में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 विल बिकम इक्वल। यस, एंगल 1 और 2 इक्वल ही है, तो व्हाट डू यू गेट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, गिविंग अस व्हाट, डिफरेंस बिटवीन 4 and 3 विल बी इक्वल टू 0। Yes, so you can prove your congruency here. Yes, यहाँ पे ये congruency prove करने के लिए आपको मिल गया enough, है कि नहीं? You can take the bigger triangle ABC, or you can also take the smaller triangle. Yes, you can take the EBC या BCE, जो भी चलेगा ना, name doesn't matter in triangles, तो ठीक है। Cool. Once you prove the congruency, you can take ABC and EBC, BC equal हो गए। Yes, these two sides are equal, correct? Ultimately what happens, these two angles will also become equal, giving us what, you can use ASA or SAS congruency, call them congruent, ultimately giving the angles to be equal। समझ गए? So since both are equal, the difference between them is 0. How you want to prove your congruency is up to you. Yes, these two angles are equal. ये दोनों angle equal है, vertically opposite angles. You can also use this. ठीक है? तो you can say triangle ABD is also congruent to triangle DCE. यस, कैसे, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ गए? हाउ यू वांट टू प्रूव योर कॉन्ग्रुएंसी इज अप टू यू। मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, बड़े ट्राइंगल को रख के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, छोटे ट्राइंगल्स को रख के प्रूव कर लो, व्हाटएवर। डन। चलो गाइस, ग्रेट, टुडे वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन। Unfortunately we're gonna have to cut it short. Yes, we will meet today at 8 p.m. Today 8 p.m. We'll be finishing functions. Yes, we'll be doing operations on functions आज रात 8 बजे। Okay, also Sunday, tomorrow 12 p.m. you have your combat. Don't forget to use my code Surana Life. Okay. Yes, निकलने के पहले guys, don't forget to hit like on this video. And if you are a subscriber or if you're planning on taking a subscription, then you need to know about Ask a Doubt. Yes, a lot of times this happens कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते, आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, राइट? So ask a doubt feature for Plus and Iconic subscribers. You can click on ask a doubt, select a picture or choose one from the gallery, highlight the parts that contain your question, give some details about the question के quant का है, LR का है, किसका है, submit it and you will get the solution to that, right? So for that all you have to do is take the subscription. You can use my referral code Surana Life. You can go for the 12 or 24 month ones, get your 10% discount. Yes, you can also go for the Iconic, where this is the pricing for 12 and 24 months. Use my referral code Surana Life, get your 10% discount. Yes, for about 2,000 or 3,000 rupees a month, depending upon whether you're taking 12 months or 24 months one, you can crack not just CAT but other management entrance test also,
and you will get personal guidance. That means clearing WAT, GD, PI will not be a tough task. Yes, there's also no cost EMI options available in case you're planning on taking it. Thank you very much for being a part of this session. I will see you tonight at 8 p.m. Until then, keep yourself safe and happy. Go ahead, chill for a while. I'll catch up with you at 8 p.m. Thank you.